मेडिकल और डेंटल के बच्चे बोरिंग होते हैं, पढ़ाई के अलावा कुछ जानते नहीं है। खुद ही देख लो। ओ भाई नहीं यार। इसको ब्लॉग करना था, बोल तो खुद बोल दे। हमको ब्लॉग करना था लेकिन आता नहीं, अभी क्या कर सकते हैं। तो इसका ब्लॉग में थोड़ा सा जगह ढूंढ रहा है और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा। वो वेट, खाली मस्ती भी नहीं है। इस वीडियो के अंदर आपको माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल्स ऑफ लंग्स, किडनी एंड ट्रैकिया देखने को मिलेगा, लाइक लाइव। लाइक I place my camera lens on the lens of the microscope and it's clearly visible. So stay tuned, watch till end, of course. Most importantly, I would like to address this comment from my previous video which says ओडिया मूवी देख रहे एक मिनट में बाहर आ गया। तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड वो ब्लॉग ले रहे हैं। अरे वाह, ये अच्छा मैं हाँ लेट्स मूव ऑन टू डांसिंग, कज तब तक गाना सुन सुन के बोर हो गया था और गाना बज रहा है तो डांस करने का मन तो करेगा ही। एंड बाय द वे 3 दिन हो गए थे इनटू द कॉलेज, लाइक नया कॉलेज स्टार्ट हुआ है एंड इतना पढ़ा रहे थे फाइनली एक फ्री पीरियड मिल रहा है ब्रो, एंजॉय करो। तो या वॉच मुझे ओ भाई नहीं यार। So since we are new into the college, sir was trying innovative ways to make us understand the medical terms वगैरह because some terms are really tough. So there was this Tom and Jerry का clip where sir explains different diseases relating it to Tom. So that was pretty interesting. Watch it. Okay, so the first disease that is see here is palmoplantar hyperkeratosis. Then it is psoriasiform plaque, which is a skin disease. Like psoriasis is a skin disease and the psoriasiform plaque is that patch that Tom has on his body. In this video you see a woman feeding Tom antibiotics. So what is basically meant to show here is Tom had recurrent infections. Then lastly we see Tom had really weak teeth and he was suffering from teeth loss. Tom was basically suffering from Papillon-Lefevre syndrome and he has a rare mutation. Okay, so YouTube stopped the music because now comes a very interesting part where we went to the microbiology lab and we looked through the microscopes. I mean 12th में भी हम लोग देखे थे through the microscope. So what was different here? We had our phones with us and we could click pictures and take videos of different cells of different body organs, like cells of trachea, cells of lungs, cells of kidney, cells of
what else was there? Compound epithelial cells were there, and I recorded them all. So watch it, exclusive clips. So this was a lab. Hello. Okay, so you all know what a compound microscope is, and you have seen one. This is a compound microscope. Now they have a new microscope, which is again a compound microscope, but it's a modern compound microscope, and it's way more easier to use. So it has like 4x, 10x, 100x, and 40x, and you just rotate it. And now I'm going to show you guys through the microscope lens. And how did I do that? By placing my camera lens over the microscope lens, na. But that is really good, so you should watch it. So now you're watching through the lens of the microscope, and the slide that you're watching is the slide of a cell of a trachea. So you can even see the cilia present on it. This is so pretty, no? And now you're having a look at the kidney cell under the microscope. So here's how it looks. थोड़ा वीडियो रिकॉर्ड करने में प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज कैमरा का लेंस और माइक्रोस्कोप का लेंस मतलब मेरा हाथ इतना स्टेबल नहीं रह रहा था, एंड इट वाज जस्ट कीपिंग ऑन एडजस्टिंग. सो आई विल शो यू अ फोटो. नाउ दिस इज अ स्क्वामस एपिथेलियल सेल अगेन अंडर द माइक्रोस्कोप. और ये हेमाटोलॉजी लैब है जो कि बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं लिए, पता नहीं शायद आगे लेंगे, बट बहुत अच्छा लग रहा है ये लैब. And we finished looking at all the slides, took all the pictures and videos that we wanted to take from the microscope. उसके बाद थोड़ा मस्ती करना तो बनता है बिकॉज पीरियड का बहुत टाइम बाकी था और कुछ करना बाकी नहीं था. तो सर बोले बस बैठो. अब वैसे थोड़ी बैठेंगे, कुछ मस्ती तो करेंगे ना. तो ये देखो, Mueve ese bum bum tam tam, mueve ese bum bum tam tam tam. yes, kidding, bye. रिकॉर्ड हो रहा है. फिर कॉलेज ख़त्म, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए गए हॉस्टल, और वहाँ पे जाके नेटफ्लिक्स देखे. किसी को बताना मत. Oh no 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 no. Beneath the weeping willow. But now, alone I lie तू मत देख श्रुति, नॉनसेंस. and weep. तो मैं जस्ट पहुंचे अभी कॉलेज से. बहुत टायर्ड हूँ, बहुत नींद लग रही है, लेकिन टाइम नहीं है. जा रही हूँ, नहा के आऊँगी अभी तो फ्रेश लगेगा, फिर देखते हैं क्या करेंगे. जस्ट नहा के निकली और पता चला कि ड्राइवर अंकल का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो दीदी को बस स्टैंड से लेना है. उसका आज लेट छुट्टी हुआ, तो अभी जा रही हूँ, उसको लेके आऊँगी. Now it's time for the comment that I wanted to address. It's from a subscriber whose name is Shakti Pragya. Hello Shakti, I really appreciate your comment. So she was appreciating and like what she started it, how's your NEET preparation, how are you and everything. Just one comment that I from her that I needed to address was, she wrote, we all want to see you as a senior doctor and not just a dentist. I mean, first things first, it's dental surgeon. Second thing, इतना नीचे से क्यों देख रहे हो डेंटिस्ट को? हाँ, फर्स्ट ईयर BDS का फर्स्ट ईयर MBBS से भी टफ होता है. आधे लोग को ये पता नहीं है बिकॉज हम MBBS का भी पढ़ाई करते हैं प्लस डेंटल का अलग से. मतलब तुम सोचते हैं क्यों हो कि BDS इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट. आई मीन, आई नो आई एम going to attempt NEET 2022,
But I honestly have no issues with BDS. And also I don't think so कि Neet 2022 crack होने वाला है. That's a different story because time नहीं हो रहा. But I'm still going to appear because everybody wants me to, and I'll just give it a shot. Let's see what happens. But BDS is an amazing subject and I will always recommend it. And never use the word कि just or it is just BDS. No. MBBS जैसा है, BDS वैसा है. Both are doctors. Mind you.